बेसिकली ओके व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि सर ग्राफ थ्योरी के सारे कंटेंट जो है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो फिर हम लोग व्हाई टू गो एंड व्हाई टू टेक अ प्लस का सब्सक्रिप्शन. Still no sound is sir, there is no sound in this session. Okay, one minute, I will do something. Okay, let's go. Let's try to understand this. So again, we'll go and we'll try to understand. So there was some problem. Now I think everything is going to be fine. So we'll go and we'll try to understand about the theorem. देखो प्रॉब्लम क्या हो रही थी मालूम है कि ग्राफ थियरी चाहे बोलो या फिर डिस्क्रीट मैथ्स बोलो या फिर तुम कोई भी सब्जेक्ट टॉपिक बोलो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, द प्रॉब्लम इज ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द YouTube की सर आपके भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं ईच एंड एवरीथिंग. सर व्हाई यू पीपल आर टॉकिंग अबाउट अ सब्सक्रिप्शन. So let me tell you the first thing that is very important about a subscription is basically a thinking ability. See, when you people are going to be present live, so let me tell you the advantage of that. When you people are going to be present live, and when I will be teaching, let's consider one particular subject or one particular topic, and then I will try to give a question. Immediately I will try to give a question, and then I will try to make you to think or try to develop the habit of that question. See, developing the thinking of developing this habit of a thinking is very important with respect to what, with respect to the gate question. कभी कभी क्या होता है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है बेसिकली कि आपको see whatever the concepts that the faculty has covered, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो यू पीपल आर थिंकिंग कि सर इसमें n की वैल्यू चेंज कर दिया गया है तो वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन. नहीं, ऐसा नहीं होता है. इवन इफ दे आर चेंजिंग द n की वैल्यू, सो व्हाट यू हैव टू डू, very good evening to all of you, very good evening Srinjoy, Pranav and Akash. So basically what I was talking about ki why to go and why to take a plus ka subscription, the thing that is very important over here is basically when you are taking the plus ka subscription, it's not about the money that you are investing, it's about such that you are saving 1 year of your life such that immediately you will be giving the examination and immediately you will be clearing it and then you will be going to IIT. That is the one thing. And second thing, you will be developing what? You will be developing the habit of a thinking. If one subject will give you that particular habit, then what will happen? You can go and you can try to have that habit into other subject. मतलब वो कोई भी एक सब्जेक्ट में आना चाहिए, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट में हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट में हो. प्रॉब्लम क्या है कि सर एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द YouTube, बट द थिंकिंग एबिलिटी यू विल नॉट बी गेटिंग until and unless you will be coming to the live. That is one of the important point that you should come on live. How you should come on live? Such that you can have this live classes, you can have the test series, you can have the unlimited practice by taking the plus ka subscription. That is very important over here. Another one is iconic subscription. अच्छा, अब अगर कोई पूछेगा मेरे को कि सर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज लाइक अ फैकल्टी इज सिटिंग नियर टू यू एंड ही इज टीचिंग यू, बेटा आज ये पढ़ लो, ये रेफरेंस बुक पढ़ लो, ये रेफरेंस बुक में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा, ये रेफरेंस बुक में से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. Already the faculty will be covering the whole reference book, but the point is, from your point, in order to sign a crash course, will you cover entire discrete mathematics, which is starting from 5th October? Yes, I will cover, Pranav. Don't worry about it. I will cover each and every topic. We are not going to skip any topic into that. Okay. So here, this is going to be the iconic subscription. So here you can have what? You can have a personal coach. So this is regarding what? This is regarding the subscription. कि life कैसे आना है, thinking ability कैसे करनी है. दूसरा एक चीज जो है कि वो प्लस के सब्सक्रिप्शन में दैट यू पीपल आर गेटिंग इज बेसिकली फैकल्टी इज पोस्टिंग अ क्वेश्चन इमीडिएटली एंड ही विल स्टार्ट द पोल. ठीक है, वो इमीडिएटली पोल स्टार्ट करेगा, तो आपको क्या करना है, इमीडिएटली बाय थिंकिंग वो एक रिफ्लेक्सेस काम करके इमीडिएटली यू हैव टू गिव द आंसर. दैट यू कैन ओनली हैव व्हेन यू विल बी कमिंग टू व्हाट, यू विल बी कमिंग टू अ लाइव का सब्सक्रिप्शन. सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज पॉइंट दैट यू विल बी हैविंग कि फैकल्टी इज पोस्टिंग इमीडिएट क्वेश्चन एंड ही विल स्टार्ट द पोल एंड बेस्ड ऑन योर रिफ्लेक्सेस you have to give the answer. So these all are the advantage with respect to what, with respect to the plus का subscription and iconic का subscription में. ठीक है, करना क्या है iconic के subscription में, when you will be going and when you will try to understand कि सर मैं कौन सा subscription लूं, I will always suggest कि go with a 12-month subscription or a 24 month का subscription. तो जब आप payment करने जाओगे, at that point of time you will be having this code. Try to use this code. And what is that code? Code is basically BABA20. BABA20 सिर्फ code नहीं है, BABA20 will give you the habit of thinking of any type of questions with respect to any particular subject.
ठीक है, एक सब्जेक्ट में आ गया तो आपको दूसरे सब्जेक्ट में भी आ गया. You people are from past few days, you people are following me on YouTube, you people are following me on Unacademy के free classes में भी. तो आप लोगों ने देखा होगा कि how the Baba is basically developing the whole concept, कि वो एक concept बनाता नहीं है, वो concept develop करता है. That is a speciality of me that you people have already seen with respect to. If you have followed me on YouTube, if you have followed me on Unacademy, you can श्रीनी जो कॉलेज का टाइम क्लास कॉलेज से क्लैश होता है. सी व्हाट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सी आइदर वन और टू लेक्चर्स विल बी क्लैशिंग. सो सपोज इफ यू आर गोइंग विद 12 months का प्रोग्राम, तो सपोज इफ सब्जेक्ट 1 इज स्टार्टिंग नाउ, देन आफ्टर सम टाइम सब्जेक्ट 1 विल बी रिपीटेशन. सो इवन इफ इट इज क्लैशिंग राइट नाउ, लेट्स कंसीडर कि दो सब्जेक्ट पैरेलली चल रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट 2 क्लैश नहीं हो रहा, सब्जेक्ट 1 क्लैश हो रहा है. So after particular period of time we can have a revision of that if you will be taking this type of subscription, 12 months ka subscription or a 24 ka month subscription. That is the important point that you people can understand. ठीक है. And the other things that you people understand, ki try to use that code is what Baba 20. That is not just a code, that is basically the habit of thinking. Okay, those people who have not followed me this channel, try to follow this channel. You will be getting each and everything that is available over there. ठीक है. चलो अब जाते हैं और पढ़ते हैं कि बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन अ प्रूफ. सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स टुडे इट्स द टॉपिक ऑफ व्हाट, इट्स टॉपिक अबाउट अ प्रूफ. ठीक है. सबसे पहले we'll go and we'll try to understand कि bipartite graph does not consist of odd length cycle. This is one of the theorem and we'll go and we'll try to understand bipartite graph does not consisting of what. Bipartite graph does not contains odd length cycle. Graph does not contains odd length cycle. First we'll go and we'll try to see this particular proof. Does not contains odd length cycle. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि basically we'll go and we'll try to understand this particular. I will teach DBMS after completion of a discrete mathematics. Pranav, you are talking about YouTube or you are talking about Unacademy Plus? Okay, so bipartite graph does not consist of odd length cycle. See, in order to decode or in order to prove this particular theorem, the first thing that we have to understand कि bipartite graph होता क्या है. तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे मालूम है? सबसे पहले हम लोग bipartite graph के बारे में बात करेंगे कि bipartite graph होता क्या है. Bipartite graph is basically a type of graph जहां पे क्या करते हैं हम लोग, उसके जो वर्टाइसेस होते हैं that we can divide it into two parts, V1 और V2 में. मतलब जो ग्राफ के वर्टाइसेस होते हैं ना, that you can divide it into two parts. One is into the V1 and another one it is into the V2. अब होगा क्या मालूम है? All the edges will be going from one set to another set but not in the same set. So suppose if I will be talking about V1 and if I will be talking about V2, तो जो भी edges होंगे that will be going from one set to another set but not into the same set. Let's try to understand why it is not consisting of what? Why it is not consisting of odd length cycle. Suppose if I will be having any particular graph like this. So the first thing that you people have, first thing that almost 30-35 days. Okay, the first thing that you people have to understand कि bipartite graph does not consisting of odd length cycle. Let's try to draw one odd length cycle. See what will happen if I will be having this particular. Suppose if I'll be having this particular graph, let's consider this is 1, this is 2, this is 3. So graph के vertices, what you can write it? You can write as 1, this is 2, this is 3. Now try to divide this thing. So you will be writing V1 here, you will be writing V2 here. Now what will happen? Try to take one vertex here. अब जो edges होंगे, that all the edges will be going from one set to another set but not into the same set. So suppose if I will be taking first vertex here, then one vertex will be connected to 2 here. Now you cannot adjust 3 here, you cannot adjust 3 here. Suppose what will happen if you will adjust 3 here, then there will be direct edge and this edge is going into this particular vertex only, so it will create a problem. Now if you will put third vertex here, this edge is going into the same set. So what is my point? My point over here is basically you cannot have any edge that will be into the same set. That is one of the important point that you people can understand with respect to what? With respect to the bipartite graph. So obviously this consisting of odd length cycle. अब क्या होगा मालूम है? Even if I will try to go and even if I will try to construct the other types of graph, then what will happen over here? कि ये triangle के लिए possible नहीं होगा. You cannot adjust the vertices with respect to that. बाकी का आपका ये adjust हो सकता है. See, this can be adjustable. This can be adjustable, but this one is not adjustable. This one is not adjustable. These three vertices are not adjustable. So we can say that bipartite graph does not consisting of what? Does not consisting of a odd length cycle. So here this is nothing but what? This is nothing but my proof. Now what will happen if you will be having the even length cycle?
Let's consider suppose if you will be having the even length cycle, तो ये कैसे connect होगा? Let's go. Let's try to understand. Suppose if I will be taking a one vertex here, this is 2, this is 3, this is 4. अब मैं one vertex को यहाँ पे ले लेता हूँ. अब क्या होगा कि 1 is connected to 2, so I can put this edge from here to here. So it will be what? It will be edge number what? It will be edge number 2. Up 2 is connected to 3, so 2 will be connected to 3, 3 is connected to 4, and 1 is also connected to 4. See, it is easily convertible to what? It is easily convertible to a bipartite graph. So we can easily say that कि bipartite graph does not consisting of odd length cycle. इसका मतलब क्या होगा कि either it consisting of no cycle at all, or it consisting of what? It consisting of a even length cycle. So these two things that you can understand with respect to what? With respect to the visualization. That is my main point. I want you to develop the thinking. That is one of the important thing. Try to go and try to have what? Try to go and try to have this visualization. So bipartite graph does not consisting of odd length cycle. So either it consisting of a no cycle at all or even length cycle at all. बाइपार्टाइट ग्राफ अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है मालूम है? आपको ये समझना है कि कुछ वर्टाइसेस में एक सेट में लिख लूं, कुछ वर्टाइसेस में दूसरे सेट में लिख लूं, जो एजेस होंगे वो एक सेट से दूसरे सेट में जाएंगे, सेम सेट में नहीं रहेंगे. दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? Okay, that is the main concept of what? That is the main concept of a bipartite graph. So we'll go and we'll try to understand about this particular thing, the whole particular thing, what is basically what is basically the bipartite graph. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये bipartite graph का मेन कॉन्सेप्ट है. ठीक है, अच्छा अब जाते हैं and we'll try to understand the other concept. Okay, okay, now we'll go and we'll try to understand the bipartite graph, maximum number of edges into a bipartite graph. Okay, let's go, let's try to understand this. Maximum number of edges into bipartite graph, edges into bipartite graph. अच्छा यहाँ पे विजुअलाइजेशन देखना कि how I can go and how I can try to give you this visualization कि maximum number of edges into bipartite graph. जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि bipartite ग्राफ का मतलब क्या होता है. bipartite ग्राफ एक ऐसी ग्राफ होती है जिसमें हम कुछ वर्टाइसेस एक सेट में लिख लेते हैं और कुछ वर्टाइसेस दूसरे सेट में लिख लेते हैं. ठीक है, so some vertices we are writing into one particular set, some vertices we are writing into another particular set, and all the edges will be going from one set to another set but not in the same set. मतलब आपका bipartite ग्राफ का सारे edges एक सेट से दूसरे सेट में जाते हैं. अगर ये भी चीज समझ में नहीं आती तो try to understand the other concept कि समझो कि there is one village where the left side is representing the name of all the men and right side is representing the name of all the women. So there will be a marriage association and that will be going from one set to another set but not in the same set. इसको just for sake of example, just for fun, you can consider as a bipartite graph. अब मेरा क्वेश्चन क्या कहता है कि how I can go and how I can try to understand कि bipartite graph में maximum number of edges कितने होंगे. Suppose if I will be going with n equals to 6, ठीक है 6 ले लिया तो मेरे को केसेस बनेंगे. Let's consider the case number 1. Case number 1 की in this vertex there will be one vertex here, there will be 5 vertices here. Let's see the other cases. Case number 2 such that I will take 2 vertex here and 4 vertex here. Let's consider the case number 3 and then case number 3 will be 3 vertices here and 3 vertices here. अब कहने का मतलब क्या है मालूम है कि इसमें 1 vertex और 5 vertices में there will be different type of graph but only one type of this graph will be giving what? There will be one type of graph that will give maximum number of edges, and how many edges it will give? It will give 5 number of edges. In this case कि 2 vertices आप लेफ्ट में ले लो और 4 vertices आप राइट में ले लो तो इसमें भी बहुत सारे ग्राफ आएंगे, लेकिन जो एक कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ है दैट विल गिव विद रिस्पेक्ट टू द केस 2 कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ विल गिव मी टोटल नंबर ऑफ एजेस एंड दैट विल बिकम व्हाट? दैट विल बिकम 8. अच्छा विद रिस्पेक्ट टू दिस केसेस वन केस विल गिव मी द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस दैट विल बिकम k33 और इसमें मेरे को कितने एजेस आ जाएंगे? 9 एजेस आ जाएंगे. तो कहने का मतलब क्या है कि I have scanned all the cases 1 versus 5, 2 versus 4 and 3 versus 3. तो maximum number of edges ये केस देता है मेरे को that will become what? That will become the 9 number of edges. So I got one particular idea कि maximum number of edges मेरे को bipartite में तभी मिलेगा जब half vertices इसमें होंगे और half vertices इसमें होंगे. ठीक है, close to half of vertices. Sir, why to close to half of vertices? Because if you will take 7 vertices, तो क्या होगा? तब प्रॉब्लम आ जाएगा ना. You cannot take 3.5 here and you cannot take 3.5 here. So in order to do that,
So we got this particular cases, and what is that particular cases? So let me write down that particular case. Suppose if I will be taking n equals to 6, so the maximum I will only get when 3 vertices will be here and 3 vertices will be here. Now sir, what is the meaning of that? Can you generalize this? Yes, I can generalize. If n is basically the total vertices, if n is basically the total vertices in a bipartite graph, so maximum number of edges I will be getting n by 2 here and n by 2 here. मतलब n by 2 वर्टाइसेस अगर एक सेट में होगा और n by 2 वर्टाइसेस अगर दूसरे सेट में होगा, तो ही जाके ये मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस देगा. समझ में आ गया? कौन? बाइपार्टाइट ग्राफ. Now, so sir, are you trying to say that the bipartite graph will give you n by 2 into n by 2 maximum number of edges? Yes, exactly. It will give me n by 2 into n by 2. That means what? That means it will be n square by 4 number of edges. Sir, what will happen if I will take n equals to 7? So इसमें केसेस लोगे तो 1 और 6 आएगा, 2 और 5 आएगा, 3 और 4 आएगा, 4 और 3 आएगा. If you try to go and if you try to see that कि K16 maximum देगा, you will be getting E equals to 6. And here you will be getting what? K25, and then this one will give me 10 number of edges. And here it will be giving me K34, that will be giving E equals to 12 number of edges. See, reality is giving me 12 number of edges, but the formula if you try to substitute, you will get 7 square by 4, matlab 12 point something. Formula is giving 12 point something, but the reality is giving me maximum number of edges, that is 12. So I cannot take n square, but I have to take floor of n square by 2. So now our concept is ready, such that maximum number of edges in a bipartite graph will be what? Will be n square by 4. But actually it will be less than or equal to n square by 4. Adjacency incidence matrix, अरे वो कुछ नहीं है आकाश, that is a part of that. बोलोगे तो अभी I can teach you now only, not a problem into that. That is just a representation. That is just a representation. ठीक है? Matrix representation, incidence matrix representation. वो graph representation ही है. If you will tell me, I can teach you now also, not a problem. ठीक है? Maximum number of edges into what? Maximum number of edges into bipartite graph, that will be what? That will be floor of n square by 4. सर फ्लोर ऑफ n स्क्वायर बाय 4 क्यों लिया आपने? कहने का मतलब ये है कि आपका जो बाइपार्टाइट ग्राफ होगा, मैक्सिमम जो होगा वो नंबर ऑफ एजेस जो होंगे वो n स्क्वायर बाय 4 होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, उससे हमेशा कम होगा. मतलब अगर उससे ज्यादा हो रहा है, so suppose based on that we can have one particular graph, we can have one particular observation. So let's consider this is observation number 1. ठीक है? We can have one particular observation number 1. So if any graph, if your graph is containing more than this number of edges, so it cannot be bipartite graph. It cannot be bipartite graph. It cannot be bipartite graph. ठीक है? ये bipartite graph होगा नहीं. It cannot be bipartite graph. ये bipartite graph बन ही नहीं सकता है. अगर मैं बोलूं कि if your number of edges will be consisting of n square by 4 plus 1, ठीक है? n square by 4 plus 1, तो it contains a triangle. ठीक है? 100% क्या होगा? It contains a triangle और it contains a odd length cycle. It contains a triangle. मैं ये बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस क्या होंगे उसके. मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस व्हाट आई विल बी गेटिंग इज बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस व्हाट आई विल बी गेटिंग इज दिस. मेरे को पता है कि बाइपार्टाइट ग्राफ में मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इतने होते हैं. अगर इससे ज्यादा हो रहा है तो इट विल नॉट बिकम अ बाइपार्टाइट ग्राफ. इट कैनॉट बी अ बाइपार्टाइट ग्राफ क्योंकि वहां पे आ ही रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा एज आ ही रहा है. सो मैक्सिमम तो उतने ही होंगे. अगर मैक्सिमम से ज्यादा हो रहा है ना तो होगा क्या मालूम है कि सपोज इफ यू विल बी हैविंग मैक्सिमम से ज्यादा, see this is the bipartite graph that will give maximum number of edges. मतलब ये ऑलरेडी पैक है. जब ये ऑलरेडी पैक है तो एक्स्ट्रा एज इफ यू ट्राई टू पुट इट, तो वो एक्स्ट्रा एज क्या होगा? वो यहां से यहां जाएगा, और इट कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर, और इट कैन गो फ्रॉम हियर टू हियर. Okay, or it can go from here to here. So if it is going from here to here, then what will happen? It will not be a bipartite graph. It will destroy what? It will destroy the property of what? It will destroy the property of the bipartite graph. Hence we can say that. See, देखो एक कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 ऑब्जर्वेशन आ रहा है. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे को 3 ऑब्जर्वेशन आ रहा है. सो पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि बाइपार्टाइट ग्राफ. सी बाइपार्टाइट ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? द बाइपार्टाइट ग्राफ कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? टोटल वर्टाइसेस n is the total vertices. So maximum number of edges what I will be getting is a floor of n square by 4. लेकिन अगर इससे ज्यादा if I will be having any particular edges, so it cannot be bipartite graph. n equals to floor of n square by 4 plus 1. It contains what? It contains a triangle.
So in this way we can go and we can try to understand this particular theorem. So this particular theorem is very easy particular theorem. ठीक है? So we have already proved one particular theorem. So we'll go and we'll try to explore the other theorems also कि बाकी के जो theorem है वो कैसे आते हैं नहीं आते हैं, that is going to be easy or not. Okay, there is one more theorem that is very important over here. We'll go and we'll try to understand. We'll go and we'll try to understand, and this is this theorem. Get me 2 or 3 times that and they have already asked कि in a simple graph at least 2 vertices will have a same degree. In a simple graph at least 2 vertices will have a same degree. At least 2 vertices will have a same degree. Vertices will have a same degree. Will have same degree. ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले तो ना हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 2 बोला है तो हम क्या करेंगे ना, n is greater than or equal to 2 ले लेंगे क्योंकि कम से कम 2 बोल रहा है. Now let's try to have the observation. ठीक है? In a simple graph at least 2 vertices will have at same degree. Sir, can we triangle or at least a cycle? Where Kunal? In this theorem, okay? See, suppose if I will be taking this. So these 2 vertices, vertex number 1 is getting degree 1, vertex number 2 is also getting degree 1. This is vertex 1, this is vertex 2. अब मैं क्या करूंगा, कंस्ट्रक्ट करूंगा. See, if I will try to construct it, so the degree of 1 is 1. Now if I will add one more edge, as soon as I will be adding one more edge, इसकी degree 1 आ जाएगी. Here I will be getting 1 plus 1. If I will try to add one more vertex, इसकी degree I will be getting 2, इसकी degree I will be getting what? इसकी degree I will be getting 1. Now if I will try to construct one, तो आप कैसे भी ग्राफ ड्रॉ करो, even if you are drawing randomly also, at least 2 vertices आपको मिलेंगे ही मिलेंगे. You will be getting at least 2 vertices जिनकी डिग्री क्या होगी, जिनकी डिग्री सेम होगी ही होगी. देखो वो डिग्री कुछ भी हो सकता है. मैंने ये नहीं बोला है कि वो डिग्री 1 ही होगा, मैंने ये नहीं बोला है कि वो डिग्री 2 होगा, मैंने ये नहीं बोला है कि वो डिग्री 3 होगा. मैं बोल रहा हूँ वो डिग्री कुछ भी हो सकता है. That you can take what? That you can take anything. But the condition should be what? Condition should be n is greater than or equal to 2. That is the main important concept. कि n is what? N is greater than or equal to 2. That is one of the important concept that you people can have it. ठीक है? तो let's consider कि डिग्री इसकी 2 है और इसकी भी डिग्री 2 है. तो कहने का मतलब है इसकी डिग्री अगर 2 है, इसकी डिग्री 2 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पर ही. मेरे को बाकी का चेक करने की भी जरूरत नहीं है. अब इसकी डिग्री मैंने 1 ले लिया, इसकी डिग्री मैंने 1 ले लिया. हाँ, yes we can say Kunal, but वो हमेशा क्या होगा मालूम है, odd length cycle आएगा. Either it consisting of a triangle or it consisting of a odd length cycle. If you are taking more than that. See here we are getting what? Let's consider this vertex 1 is getting degree 2. This vertex 2 is also getting degree 2. तो ये vertex 1 की भी डिग्री 2 है, vertex 2 की भी डिग्री 2 है. तो कहने का मतलब क्या होगा मालूम है? कहने का मतलब ये होगा कि इन दोनों vertices की डिग्री 2 है. So we can say that कि ये this is basically satisfying the theorem. ठीक है? This is basically satisfying the theorem. अब मैं क्या करूंगा मालूम है? I will go and I will try to prove this theorem. तो proof is also important. अच्छा, इसका ऑब्जर्वेशन एक चीज है कि what is that observation? The observation number 1 that we can understand with respect to this is basically this particular statement. If all degrees are distinct, okay, if all degrees are distinct, what we can say that the graph is not possible. All degrees are distinct. All degrees are distinct. Okay, all degrees are distinct. Graph is not possible. Graph is not possible. Graph is not possible. ये कभी पॉसिबल नहीं होगा if all degrees are going to be distinct. आप ड्रॉ कर लो, सिंपल ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं. So suppose if you will be having any statement like this, suppose if you will be having 7 6 5 4 3 2 1, the all degrees are distinct, graph is not possible. Graph is not possible. It is very helpful in those type of questions that degree sequence का questions में जो गेट में पूछा जाता है कि यार अगर ये डिग्री सीक्वेंस दिया है, ग्राफ आपका पॉसिबल होगा नहीं होगा. So this theorem is very helpful in those type of question कि आपका जो ग्राफ होगा कि if all degrees are distinct 5 4 3 2 1, suppose if you are taking 7 6 5 4 3 2 1, so all degrees are distinct, the graph is not going to be possible. I can easily say with respect to what? With respect to this particular concept, and that is nothing but what? That is nothing but observation. इसको प्रूफ करते हैं. So we'll go and we'll try to prove it कि basically ये प्रूफ कैसे आता है. ठीक है, let's see that. Suppose if I will be taking n equals to 5 vertices, so I will be getting v1, this is v2, this is v3, this is v4, this is v5. अगर मेरे पास 5 vertices हैं, so how many distinct degrees I will be getting? अगर 5 vertices हैं, तो मैं अगर डिग्री 1 से शुरू करता हूं, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता हूं? 4 तक जा सकता हूं. So I am trying to prove by contradiction. ठीक है?
अगर प्रूफ नहीं चाहिए तो यू कैन टेल मी, आई कैन राइट ऑल द थ्योरम्स, नॉट अ प्रॉब्लम. So proof by contradiction. So total distinct degrees I will be getting what? Total distinct degrees I will be getting is basically what? I will be getting is basically 4. कहने का मतलब है कि D1 यहाँ आएगा, ये 1 डिग्री हो गया. मैं सोच रहा हूँ ना सबकी डिग्री डिस्टिंक्ट ले लेते हैं. मैंने डिस्टिंक्ट ले लिया. अगर मेरे को 5 वर्टाइसेस हैं तो मेरे को पता है कि सबकी डिग्री अगर मैं डिस्टिंक्ट ले लूंगा तो आई विल ट्राई टू प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन कि मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ. तो ये D3 हो गया और ये D4 हो गया. लेकिन अकॉर्डिंग टू पिजन होल प्रिंसिपल होगा क्या मालूम है कि इफ यू असाइन दिस डिग्रीज टू दिस, अब ये 5 वाला वर्टाइसेस जो है दैट यू हैव टू असाइन समवेयर. तो मैंने डिस्टिंक्ट डिग्रीज लिया था, बट व्हाट इट टर्न्स आउट टू बी कि 2 वर्टाइसेस विल फॉल ऑन सेम डिग्री. So I was taking actually different vertices. I was taking actually the different distinct degrees. But हुआ क्या कि 2 vertices will fall on same degree according to the pigeonhole principle. So we can easily say that in a simple graph, at least 2 vertices will have what? At least 2 vertices will have a same degree. That is one of the proof of this particular statement that you can easily understand. I hope you have got it. What I'm trying to say that. ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है. आई विल गो एंड आई विल ट्राई टू क्लियर दिस कांसेप्ट वन मोर टाइम. सो दिस इज नथिंग बट आवर नेक्स्ट थ्योरम. सो विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर थ्योरम आल्सो इफ यू पीपल आर विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो हियर वी आर हैविंग व्हाट? वी आर हैविंग द टोटल नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन साइकिल. ये गेट का क्वेश्चंस था. टोटल नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन साइकिल इन Kn. Hamiltonian cycle in Kn. Suppose if I will be taking K4. Suppose if I will be taking K4. Hamiltonian cycle होता क्या? सबसे पहले तो वो एक कॉन्सेप्ट है कि what is the meaning of Hamiltonian cycle. Okay? So what is the meaning of Hamiltonian cycle? Hamiltonian cycle का मतलब क्या होता है मालूम है कि ये एक ऐसा साइकिल होना चाहिए जो क्लोज होना चाहिए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल साइकिल का मतलब ये होता है कि क्लोज होना चाहिए एंड इट शुड कवर व्हाट? इट शुड कवर ऑल द वर्टाइसेस. तो मेरे को यहाँ पे पता करना है कि इसमें कितने तरीके के अलग-अलग वर्टाइस, कितने अलग तरीके के अलग-अलग ग्राफ आ सकती है. सो विल गो एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं K4 ले लेता हूँ. सपोज इफ आई विल बी टेकिंग द K4, देन व्हाट विल हैपन? Here I will be having, this is vertex number 1. एक गेट में क्वेश्चन भी आया था, vertex number 2, vertex number 3, vertex number 4. अब सपोज कि अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, तो 1 से अगर मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि if I will be starting from what? If I will be starting from 1, then what will happen? I can go to 2, I can go to 3 and I can go to 4. Actually if I will be starting from 1, so I am having a 3 ways I can go what? I can go somewhere. So here I am writing what? I am writing a 3 ways. Now I can go to 2, I can go to 2, I can go to 3, I can go to 4. अगर मैंने 1 से स्टार्ट किया तो मैं 2 पे जा सकता हूँ, 3 पे जा सकता हूँ, 4 पे जा सकता हूँ. ठीक है, साइकिल बनाने के लिए. समझो कि अगर मैं 2 पे चले गया, सपोज इफ आई विल बी गोइंग थ्रू दिस. सो व्हाट इज द हैमिल्टोनियन साइकिल? दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको सारे वर्टेक्सेस कवर करने और क्लोज करना है. अब अगर मैं 2 पे जाता हूं तो 2 के बाद में आई एम ओनली हैविंग ए 2 चॉइसेस. Either I can go to 3 or I can go to 4. So here I am having what? Here I am having a 2 ways. Okay, that is nothing but 2 ways. So 3 ways into what? 3 ways into 2 ways. अब मैं अगर समझो कि सपोज में if I will be going to 3, तो 3 के आने के बाद में मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइसेस होगा कि मैं 4 पे जाऊंगा, क्योंकि मैं 2 पे नहीं जा सकता, मैं 1 पे नहीं जा सकता. So I am having only one way and that is what? That is nothing but 4. अब 4 पे आया तो कोई चॉइस नहीं होगा. I will be going and I will be trying to into what? Into 1. तो लास्ट वाला कितना हो गया? दैट विल बी 1 वे. सो टोटल 1 विल बी व्हाट? 3 फैक्टोरियल. बट द थिंग इज कि अगर आप ये साइकिल लेते हो, लेट्स कंसीडर कि सपोज यू आर टेकिंग 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड सपोज इवन इफ यू आर टेकिंग 1, अगर मैं आप 1 से 2 पे जा रहे थे या अगर आप 1 से 4 पे भी जाते हो कि 1 4 दिस इज 3, दिस इज 2, तो इसमें डायरेक्शन का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो दिस साइकिल एंड दिस साइकिल आर सेम साइकिल एक्चुअली. ठीक है, ये देखना कि 1 से मैं 2 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 4 पे गया, फिर 1 पे गया, या तो मैं अगर 1 से 4 पे गया, फिर 3 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 1 पे गया. These two cycles are same, so we can easily write that will be what? That will be divided by 2. ठीक उसी तरीके से if I will be talking with respect to what? With respect to k of n के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट वर्टेक्स के पास कितनी पॉसिबिलिटी रहेगी? n-1 वेज से वो दूसरे वर्टेक्सेस पे जा सकता है. जब अगर वो n- let's consider कि this is the total k of n vertices, तो suppose if I will be going and if I will be reaching to one particular vertex, n-1 तरीके से मैं किसी भी vertex पे जा सकता हूँ.
मैं एक वर्टेक्स पे आके रुक गया, जब मैं उस वर्टेक्स पे आके रुक गया तो होगा क्या मालूम है कि नाउ आई एम हैविंग द अनदर n-2 ways I can go to another vertex, तो n-1 into n-2 into n-3 ऐसे वो डिक्रीज होते जाएगा, and then what you will be getting resembles to this, you can understand, you will be getting what, you will be getting n-1 divide resemble to this, what you will be getting n-1 factorial divided by 2, but your cycle will be what, your cycle will be same. So that's why number of Hamiltonian cycle in Kn, you will be getting what, you will be getting n-1 factorial divided by 2. This is the proof of that. You can understand, you can have the visualization with respect to what, you can have the visualization with respect to that. This is a gate question, gate में भी पूछा था, ठीक है, that is nothing but we can understand with respect to what, with respect to this particular concept. ठीक है, in this way we can understand what, we can understand with respect to all the concept that is related to that. I hope you got it ki how you can find out total number of Hamiltonian cycle. You can also understand the same concept with respect to the total number of Hamiltonian cycle in K and M. ठीक है, that you will be getting what, that will be getting total number of Hamiltonian cycle, you will be getting what, you will, अच्छा hypercube भी सुनना है, ठीक है, चलो hypercube भी बता देता हूँ कि what is a hypercube and all the concepts related to that hypercube. ठीक है, let's consider basically what is a hypercube. So hypercube पढ़ने के लिए मैं क्या बताऊंगा मालूम है, we'll try to understand कि all the concepts that is related to hypercube. अच्छा, hypercube समझने के लिए ना एक concept बहुत जरूरी है hypercube का, कि hypercube क्या होता है मालूम है, कि graph vertices are represented as a n-bit signal. ठीक है, once more ये सुनना है आकाश, ये वाला जल्दी बोलो, ठीक है, बाई 2 इसलिए हुआ कि सपोज इफ आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स 1, तो वर्टेक्स 1 से दो चॉइसेस थे मेरे पास. सी इफ आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम वर्टेक्स 1, तो वर्टेक्स 2 पे जा सकता हूं, 3 पे जा सकता हूं, या तो 4 पे जा सकता हूं, मतलब मैं किसी वर्टेक्स पे भी जा सकता हूं. सपोज इफ आई विल बी गोइंग फ्रॉम, आई एम हैविंग ए 3 चॉइसेस, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, आई कैन गो टू एनी वन ऑफ दिस चॉइसेस. सो बेसिकली द फर्स्ट वन के पास 3 तरीके हैं, 3 वेज हैं, ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट वन के पास व्हाट क्या है, फर्स्ट वन के पास 3 तरीका है, कि अब समझो कि आप एक केसेस लेते हो. लेट्स कंसीडर द केस नंबर 1. सपोज यू विल गो टू 2, यू विल गो टू 3, यू विल गो टू 4, यू विल गो टू 1. नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई विल बी हैविंग 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4. सो उन 3 केसेस में अगर मैं 4 पे जाता हूं और 3 पे जाता हूं, फिर 2 पे जाता हूं, फिर 1 पे जाता हूं, सो इन, ठीक है, so basically what I will be having, so here see that's a doubt session, Srinjoy, you are asking the doubt basically, okay, so you are not learning basically, so I want you to have doubt related to this particular concept, okay, and if you want I can have this special session. I'm teaching Hamiltonian, you are asking the doubt of other concepts, okay, ask the doubt related to this topic. So if you will ask the doubt related to this topic, I'll be very helpful to, you know, I can teach you multiple times this type of concept, but right now I'm teaching this, you are asking about something else, okay, that's not the good thing. So let me complete this first, and then if you will tell me sir I need this particular concept, I can teach you that particular concept, ठीक है, मैं वो concept आपको बता दूंगा, ठीक है. अब मैं हाइपरक्यूब पढ़ाने जाऊंगा तो आप बोलोगे कोई और टॉपिक पढ़ो, तो फिर this is like a jump, ठीक है, that's like a one-to-one conversation, ठीक है. So let me teach first, I have started the Hamiltonian, first let me teach this Hamiltonian, and if you will tell me something else कि मेरे को ये पढ़ा दो, मैं वो पढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं वो पढ़ा दूंगा, okay. So you are demanding like कि sir I need hypercube, I need this particular concept, I need this particular concept, ठीक है. So let me ask a doubt related to this, okay. So I was explaining why it is going to be divided by 2. Let me explain you this thing as a one more time. Suppose if I will be having this thing, let's consider कि suppose, okay, suppose if I will be having this thing कि अब फर्स्ट वाले के पास देखो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले के पास मेरे पास 2 चॉइसेस हैं. लेट्स गो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सपोज इफ आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 3 चॉइसेस हैं, सो या तो मैं 2 पे जा सकता हूं, या तो मैं 3 पे जा सकता हूं, या तो मैं 4 पे जा सकता हूं. तो समझो कि मैं अगर 2 पे गया, ठीक है, तो 2 के पास में वापस से मेरे पास ये देखना कि 1 2 3, फिर 4 पे आने के बाद फिर वापस में 1 पे आ गया,
तो 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 1, तो ये एक साइकिल बना। उसके बाद में अगर मैं ये वाला साइकिल लेता हूं कि अगर मैं 1 से स्टार्ट किया, ठीक है, फिर 4 पे गया और फिर मैं वापस कहां पे आ गया, 3 पे आ गया, और उसके बाद में मैं वापस कहां पे आ गया, 2 पे आ गया, और फिर मैं वापस कहां पे आ गया, फिर मैं वापस आ गया आपके पास 1 के पास में, ठीक है। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट किया, 1 से 4 पे गया, 4 से 3 पे आया, 3 से 2 पे आया, वापस 1 पे आ गया। So 1 to 4, 4 to 3, फिर 2 और फिर 1. See, these two cycles are same basically. These two cycles are same. So when I am taking n minus 1 factorial, उस n minus 1 factorial में ये cycle भी included है, ये cycle भी included है. That is why basically I am dividing by 2, and that's how I will be getting what the total number of what? That's how I will be getting what total number of edges. So total number of cycle. In this way, this is a clear expression with respect to that. And if you want the homework also, I can give you the homework also. How many cycles? Same concept के ऊपर, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर मेरे को क्या पूछना है, मेरे को पूछना है कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ अ हैमिल्टोनियन साइकिल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हैमिल्टोनियन साइकिल that I will be getting with respect to what Hamiltonian cycle in KNN. सेम कॉन्सेप्ट है, जहां पे n और n क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। आकाश, आई होप यू हैव गॉट दिस कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिवाइडेड बाय 2, वो समझ में आया रहेगा आपको, ठीक है। सो दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर थ्योरम। ओके, दिस इज अ होमवर्क, यू कैन कैलकुलेट की हाउ मेनी। इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है जो मैंने पहले वाला बताया, ठीक है। इसका आंसर चाहिए तो आई कैन राइट द आंसर्स आल्सो, सो यू कैन वेरीफाई, बट इफ यू गॉट द आंसर, सो ट्राई टू गो एंड ट्राई टू टेल मी, ठीक है, कि सर मेरे को आंसर मिल गया। सो हाउ यू कैन टेल मी कि अनअकैडमी पे देयर इज वन मैसेज बॉक्स। सो दोस पीपल हु हैव नॉट फॉलोड मी ऑन अनअकैडमी, ट्राई टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, ठीक है, ट्राई टू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। और जिन लोगों को ग्राफ थ्योरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना है ना, अच्छा, उस अनअकैडमी पे डीपीपी सीरीज है, ठीक है, डीपीपी डीएम करके सीरीज है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्क्रीट मैथ्स, इसकी पूरी एक सीरीज है। सो इफ यू आर थिंकिंग यू आर गुड इनटू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ट्राई टू सॉल्व दिस सीरीज, ठीक है, तो आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि वेयर यू आर एग्जिस्टिंग। ओके, सो आई हैव गिवन अ वेरी गुड क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू डीपीपी डीएम सीरीज, ठीक है, आप एक बार उसको सॉल्व कर लो, एंड इन दैट डीपीपी सेशन आई हैव गिवन द proof of that, so you can also see that proof of that. So those people who have not followed me, please try to follow me over there, ठीक है। तो Srinjoy, if you are thinking that you are very good into discrete mathematics, go and solve the DPP DM series. Okay, that's a good thing. Okay, we'll go and we'll try to understand the other theorems that is related to that. Okay, so first of all, try to follow me over there. Okay, सबसे पहला काम तो वही कर लो आप लोग। चलो जाते हैं और फिर कोई एक प्रूफ के बारे में बात करते हैं। एक प्रूफ है जिसको व्हाट वी आर सेइंग कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज लेस देन और इक्वल टू एज कनेक्टिविटी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री is less than or equal to 2e by n is less than or equal to maximum degree is less than or equal to n minus 1. See, this proof is very important and this is one of the important concept that you will be having with respect to the graph theory. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी। ये आपका क्या है, वर्टेक्स कनेक्टिविटी है, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है ये, इसको क्या कहते हैं, एज कनेक्टिविटी कहते हैं, ठीक है, एज कनेक्टिविटी। एक्चुअली इसको प्रूव करने के लिए यू विल रिक्वायर मोर देन 2 आवर्स, बट आई विल ट्राई टू गिव यू समथिंग इन अ मिनिमम टाइम। सो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम डिग्री, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस वन इज कॉल्ड एज अ मिनिमम डिग्री एंड दिस वन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस वन 2e इज कॉल्ड एज अ एवरेज डिग्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं, we are calling this as the average degree, कि basically ये average degree क्या है, and this one is called as what, this one is called as a maximum degree. So this is the important concept, this is the one of the important concept, this is one of the theorem, largest inequality theorem into what, graph theory, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी इज लेस देन और इक्वल टू एज कनेक्टिविटी, लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 2e by n, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री, लेस देन और इक्वल टू n minus 1. That is one of the important concept that you can have. सबसे पहले ना मैं क्या करूंगा, मैं हाफ ऑफ द प्रूफ जो है वो ट्राई करूंगा इसको कंप्लीट करने का। कि हाफ ऑफ द प्रूफ क्या होगा मालूम है, कि आई विल ट्राई टू राइट कि मिनिमम डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू 2e by n and less than or equal to maximum degree and less than or equal to n minus 1. सबसे पहले मैं इसको प्रूफ करूंगा, बाद में ये वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी का मतलब भी बताऊंगा, and I will try to prove with the help of what, I will try to prove with the help of by giving the definition कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी क्या है आपका और एज कनेक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जाते हैं और वर्टेक्स कनेक्टिविटी, मिनिमम डिग्री और मैक्सिमम डिग्री के बारे में बात करते हैं।
अब एक ग्राफ ले लेता हूं कि लेट्स कंसीडर सपोज इफ आई विल बी हैविंग एनी पर्टिकुलर ग्राफ लाइक दिस. ओके, लेट्स कंसीडर सपोज इफ आई विल बी हैविंग a graph like this. Let's consider this is nothing but what? This is nothing but my graph. I'm taking two graph in order to prove this theorem. इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है. सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्या बोला कि मिनिमम डिग्री का मतलब क्या होता है, ठीक है. मिनिमम डिग्री, देखो हर एक ग्राफ में आपको मिनिमम डिग्री मिलेगा ही मिलेगा. मिनिमम डिग्री को रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है. And let's consider कि here you will be having what? Here you will be having the maximum degree also. So we'll go and we'll try to understand what is the maximum degree that will be related to that. Suppose if I will be having this particular graph, मैं अगर दो ग्राफ लेता हूं यहाँ पे, ठीक है. अब वो जो पिछले वाला थ्योरम लिखा ना, उसके ऊपर बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस बन जाते हैं. तो अब सबसे पहले मैं मैक्सिमम डिग्री के बारे में बात करता हूँ, मिनिमम डिग्री के बारे में बात करता हूँ. इसमें अगर मैं मिनिमम डिग्री ढूंढने जाऊंगा, if I will go and if I will try to find out the minimum degree in this graph, what you will be getting? You will be getting 2. क्यों? क्योंकि मिनिमम डिग्री तो ही दिया हुआ है. अब अगर इसमें मैं पूछने जाऊंगा कि what is the maximum degree with respect to this graph, you will be saying कि 3. If I will be saying what is the minimum degree of this graph, you will be saying कि 2. If I will be saying what is the maximum degree of this graph, तो भी आप बोलोगे कि 2 है. अब अगर मैं एवरेज डिग्री की बात करूं कि एवरेज डिग्री मतलब क्या होता है, एवरेज डिग्री इज बेसिकली डिफाइनिंग एज व्हाट? एवरेज डिग्री इज बेसिकली डिफाइनिंग एज कि सम ऑफ ऑल डिग्रीज, मतलब सम ऑफ ऑल डिग्रीज D1 फिर D2 फिर D3 फिर D4, क्योंकि 4 ही डिग्री है मेरे पास फिलहाल, एंड डिवाइडेड बाय टोटल वर्टाइसेस. डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय टोटल वर्टाइसेस. अब अगर मैं कहूं कि हर एक बच्चे के पास 2-2 रुपए हैं, 4 बच्चे हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऑन एन एवरेज उनके पास क्या है? 2 रुपए हैं. बिल्कुल बोल सकता हूं. तो अब सबकी डिग्रीज क्या है? सम ऑफ ऑल डिग्रीज क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिग्रीज इफ यू नो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, तो दैट इज नथिंग बट 2 ही होता है, एंड 2e by n. 2e by n जो होगा वो क्या होगा? आपका एवरेज डिग्री होगा. विद रिस्पेक्ट टू दिस केस व्हाट आई कैन राइट is minimum degree, and that is equals to what? 2e by n, and that is equals to what? That is equals to the maximum degree with respect to this case. लेकिन अगर with respect to this case करूंगा तो क्या हो जाएगा कि minimum degree will be less than of 2e by n and less than of maximum degree. So with respect to the case number 1 and with respect to the case number 2, what I can conclude कि your minimum degree will be what? Your minimum degree will be less than or equal to 2e by n, less than or equal to maximum degree. इसमें आपका क्या होगा मालूम है? इसमें एवरेज डिग्री आपका 2 plus 3 plus 3 plus 2 divided by 4, 2.5 के करीब में आएगा something. So here what you will be getting? Here you will be getting the minimum degree is less than or equal to 2e by n, less than or equal to maximum degree. ये मेरे को half of the proof आ गया. समझ में आ गया? ये बता देना मेरे को. This is the half of the proof कि इसमें क्या होगा मालूम है कि here this what I got कि minimum degree is less than or equal to 2e by n, less than or equal to maximum degree. less than or equal to n minus 1 का मतलब क्या होता है कि आपका जो अगर सिंपल ग्राफ होगा तो जो मैक्सिमम डिग्री है वो n minus 1 के ऊपर कभी नहीं जाती है. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कि वो n minus 1 के ऊपर कभी नहीं जाएगा. दैट इट विल बी व्हाट? इट विल बी n minus 1. ठीक है, सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम डिग्री किसी भी ग्राफ का विल नेवर बी क्रॉसिंग n minus 1. दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दिस. तो यहां तक तो मेरे को कंप्लीट हो गया, यहां तक तो प्रूफ आ गया, मेरे को विजुअलाइजेशन भी आ गया. बट व्हाट आई हैव टू अंडरस्टैंड कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी. तो वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी होता क्या है कि रिमूवल ऑफ वर्टाइसेस, रिमूवल ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस फ्रॉम अ ग्राफ विल मेक ग्राफ एज अ डिस्कनेक्टेड ग्राफ. अगर मैं वर्टाइसेस निकालता हूं तो उसको हम लोग वर्टेक्स कनेक्टिविटी कहते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होना चाहिए. समझ में आ गया? मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होना चाहिए. ठीक है, और अगर मैं एज कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो एज कनेक्टिविटी क्या होना चाहिए? एज कनेक्टिविटी इज गोइंग टू बी व्हाट? एज कनेक्टिविटी इज गोइंग टू बी minimum number of edges removal of this will make graph as a disconnected graph. Actually आपके पास क्या होगा ना? connected graph ही होगा. ठीक है, तो आप क्या करोगे उसमें से minimum number of vertices अगर निकालते हो बाहर और ग्राफ को देखो कि अगर वो डिस्कनेक्टेड है तो ये जो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं ना, इनको वर्टेक्स कनेक्टिविटी कहा जाता है. अब एज के बारे में अगर मैं बोलूं कि रिमूवल ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, अगर मिनिमम नंबर ऑफ एजेस निकाल दिया और अगर मैं ग्राफ को देखता हूं और वो डिस्कनेक्टेड हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज नथिंग बट द एज कनेक्टिविटी. देखो हर एक ग्राफ में मिनिमम डिग्री होगा. मिनिमम डिग्री समझो कि सपोज ये वाला वर्टेक्स जो है दैट इज डिफाइनिंग एज ए मिनिमम डिग्री. मिनिमम डिग्री का मतलब क्या होता है? मिनिमम डिग्री का मतलब होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस एसोसिएट हो रहे हैं. तो अगर मैं बोलूं कि मिनिमम नंबर ऑफ इतने एजेस ही निकाल दिया तो डिस्कनेक्टेड हो गया. बिल्कुल डिस्कनेक्टेड हो गया. अब जैसे कि एग्जांपल के लिए सपोज इफ आई विल बी टेकिंग दिस, तो एज कनेक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट?
with respect to this particular case, if I will try to say that with respect to this particular case, what you will be getting, edge connectivity of this graph, that will be equals to, what is the minimum degree? First try to understand. I hope you people are getting. If you are not getting, let me know that. तो मैं क्या रिलेट करना चाहता हूँ मालूम है? मैं ये रिलेट करना चाहता हूँ कि एज कनेक्टिविटी इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री. मेरे को ये पता करना है. अब इस केस में देखना कि मिनिमम डिग्री क्या है, या फिर इस केस में देख लो कि व्हाट इज द मिनिमम डिग्री. मिनिमम डिग्री इस केस में है 2. तो अगर मैं एज कनेक्टिविटी बोलूंगा तो एज कनेक्टिविटी भी 2 ही होगा. लेकिन क्या ये सारे ग्राफ में होता है? नहीं, सारे ग्राफ में नहीं होता है. ये वाले ग्राफ में देखना कि मिनिमम डिग्री कितना है? मिनिमम डिग्री है 2. लेकिन इसमें से मैं अगर एक एज निकालता हूं तो डिस्कनेक्टेड हो जाएगा. तो एज कनेक्टिविटी कितनी हो गई? 1 हो गया. तो बेस्ड ऑन दिस टू केसेस, समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि योर एज कनेक्टिविटी इज बेसिकली लेस देन ऑफ मिनिमम डिग्री. यहां पे क्या हो जाएगा आपका कि एज कनेक्टिविटी इज बेसिकली इक्वल्स टू मिनिमम डिग्री. So if I will combine case number 1 and if I will combine case number 2, what I will be getting? I will be getting edge connectivity is less than or equal to minimum degree. पहले के थ्योरम से I can relate it. Minimum degree is less than or equal to 2e by n, less than or equal to maximum degree, and less than or equal to n minus 1. Vertex connectivity क्या होता है कि minimum number of vertices निकालने पे ग्राफ आपका डिस्कनेक्टेड हो रहा है. एज कनेक्टिविटी क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ एजेस निकालने पे. इसमें आप मिनिमम कितना एज निकाल सकते हो? एक ही निकाल सकते हो. इसमें मिनिमम एज कितना निकाल सकते हो? एक निकाल सकते हो. और वो आपका क्या हो रहा है? डिस्कनेक्टेड हो रहा है. तो मैं यहां बोल सकता हूं कि यहां पे एज कनेक्टिविटी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री, लेस देन और इक्वल टू 2e by n, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री एंड n minus 1. इसको अगर अच्छे से लिखना है तो मैं अच्छे से भी लिख सकता हूं. ठीक है. सो फ्रॉम बोथ द केसेस व्हाट आई गॉट इज बेसिकली द एज कनेक्टिविटी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री फ्रॉम बोथ द केसेस. इसको मैं पहले वाले थ्योरम से अगर कंबाइन करना चाहूंगा तो व्हाट आई विल बी गेटिंग कि एज कनेक्टिविटी इज लेस देन और इक्वल टू मिनिमम डिग्री इज लेस देन और इक्वल टू 2e by n एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू व्हाट? मैक्सिमम डिग्री. पहले वाला जो आया था ना थ्योरम, उससे रिलेट किया तो व्हाट आई विल बी गेटिंग? आई विल बी गेटिंग n minus 1. ठीक है. यहां से देख लो, ये वाला आया था मेरा मिनिमम डिग्री लेस देन और इक्वल टू 2e by n, लेस देन और इक्वल टू मैक्सिमम डिग्री. अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं कि मिनिमम डिग्री दिस एज कनेक्टिविटी यहां पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ये पहले वाले थ्योरम से कनेक्ट कर दिया, देन आई गॉट दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट. अब मैं वर्टेक्स कनेक्टिविटी और एज कनेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा. लेट्स कंसीडर कि सपोज इफ आई विल बी हैविंग दिस ग्राफ, सम ग्राफ लाइक दिस, सेम दोनों ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं कि सपोज इफ आई विल बी हैविंग दिस टाइप ऑफ ग्राफ, लेट्स कंसीडर दिस इज अ ग्राफ 1, लेट्स कंसीडर दिस इज अ ग्राफ 2. ओके, लेट्स कंसीडर हियर. Okay, suppose if I will be having these two graphs. Now if I will be trying to say that कि here what is the edge connectivity? Edge connectivity भी 1 है, vertex connectivity भी 1 है. vertex connectivity क्या कहता है? removal of minimum number of vertices will make graph as a disconnected graph. और आपका edge connectivity क्या कहता है कि removal of minimum number of edges from a graph will make graph as a disconnected graph. So which in some cases what I will be getting, in some cases vertex connectivity is less than or equal to the edge connectivity. ठीक है. ये क्या कहता है? इक्वल होता है कभी कभी. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका ये वर्टेक्स कनेक्टिविटी है, अच्छा इसमें कितने वर्टाइसेस निकालने पे आपकी ग्राफ, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टाइसेस निकालने पे आपकी ग्राफ जो है वो डिस्कनेक्टेड हो रही है, एंड दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी 1. ये वर्टेक्स निकाल दिया, मेरी ग्राफ जो होगी डिस्कनेक्टेड हो जाएगी. ठीक है. एज कनेक्टिविटी के बारे में बात करूंगा कि एज कनेक्टिविटी क्या होता है. एज कनेक्टिविटी कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ एजेस निकालने पे आपकी ग्राफ क्या होनी चाहिए? आपकी ग्राफ जो होनी चाहिए वो डिस्कनेक्टेड होगी. इसमें मिनिमम एजेस कितना आ सकता है? 2 ही आ सकता है, या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, कोई भी, लेकिन मिनिमम होना चाहिए. इसमें कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट आई कैन राइट कि मेरा जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी होगा ना, मेरा जो वर्टेक्स कनेक्टिविटी होगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? दैट इज गोइंग टू बी लेस देन ऑफ एज कनेक्टिविटी. तो ये केस नंबर 1 हो गया और ये आपका केस नंबर 2 हो गया. So in some graph it behaves like that, in some graph it behaves like that. So based on these two cases, what I can combine ki basically what I am getting is vertex connectivity is less than of edge connectivity. So your vertex connectivity is less than or equal to edge connectivity from 1 and 2, from 1 and 2. अब मैं अगर पुराने वाले थ्योरम के ऊपर जाता हूं, और पुराना वाला थ्योरम क्या कहता है मेरा कि edge connectivity is less than or equal to this. So if I will try to combine, what I will be getting the vertex connectivity is less than or equal to edge connectivity. So in this way I can connect it. I can connect the vertex connectivity with 2e by n. I can connect this with this. So actually you will require two particular concept.
in order to complete this particular thing. I hope you have got it basically what is the meaning of that कि वर्टेक्स कनेक्टिविटी किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है. इसके ऊपर गेट में मतलब you can solve 7 to 8 questions by single line statement. ठीक है, by single line statement you can connect all the things कि vertex connectivity is less than or equal to, मतलब ये मैंने जो भी बताया है, ठीक है, you can take this particular graph. I have given basically मैंने 3-4 थ्योरम एक में ही क्लब कर दिया, ठीक है. तो basically what you will be getting कि I can write here so that what is that कि your vertex connectivity is less than or equal to edge connectivity is less than or equal to minimum degree is less than or equal to 2e by n and is less than or equal to maximum degree and it is less than or equal to what? It is less than or equal to n minus 1. Okay, that will be equals to what? Less than or equal to n minus 1. So in this way actually you can clear all the things. सारे concept यहाँ पे clear हो जाते हैं. You can have all these things. ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. इतने ही थ्योरम्स प्रूव हुए. फिर कोई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. अच्छा, कल जो है वो कल एक सेशन है, मैराथन सेशन है, वो आ जाना. फंक्शंस जितने होंगे, 1 to 1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस क्या होता है, ठीक है, इनवर्स क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होता है, वो सारी चीजें बता दूंगा मैं फंक्शंस के बारे में. अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होगा ना कि फंक्शंस किस तरीके से पढ़ते हैं या डाउट है उसमें, तो आप लोग एक बार कल आ जाओ एंड आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, अपने फ्रेंड को भी लेके आ जाओ, उनको भी दिखाओ कि इस तरीके के थ्योरम्स होते हैं, इस तरीके के गेट पे प्रिपरेशन की जाती है. एंड इफ यू पीपल आर रियली डेडिकेटेड फॉर अ गेट, ठीक है, ठीक है, तो if you people are really dedicated for a gate, so what you people are waiting, try to come to a live. Okay, tomorrow I think 6 to 8. Okay, 6 to 8 tomorrow, 6 to 8. Okay, 6 to 8 you will be having this session. Okay, you will be having this session 6 to 8. So try to come and try to take that. So Akash, if you like that ना, so follow me on Unacademy. ठीक है, आप follow कर लो, वहां पर भी मैंने बहुत सारे सेशन लिए हैं. And if you people are really dedicated for a gate, why you people are waiting so much? Try to take a subscription and come to my class. Okay, come to my Satish Yadav's class. Okay, take a subscription and come to my class and develop the habit of a thinking. ठीक है, every day I am teaching discrete mathematics, basically more than 120 hours I will be teaching for you. Okay, you can each and every topic, Bell number क्या होता है, Stirling number क्या होता है, each and every concept that I will be teaching into that. Okay, so that's the thing that you will be having. Okay, so if you want to take a subscription, ठीक है, तो you can tell to your friend also कि they can also come to my class. ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही पढ़ा रहा हूँ. The whole team is there. Whole team is there. I will be teaching discrete maths and DBMS. The other team members will be teaching 2 or 3 subjects. The other so we will be covering about your whole syllabus. मतलब गेट का कोई टेंशन ही नहीं है आप लोगों को. ठीक है, इन दिस वे यू कैन कम, यू कैन टेक दिस सब्सक्रिप्शन. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच. अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी बताओ कि बाबा आ गए हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच.